12th. We are not here because we are the perfect speakers, but we are here because we are the living proof of what skill, education, and exposure can do. एग्जैक्टली पहले स्कूल का मतलब होता था किताबें, होमवर्क, एग्जाम एंड मार्क्स. लेकिन आज कहानी बदल गई है. Today, many of those schools are equipped with healthcare labs, fashion studios, 3D printers, and even drone technology. That's right. From rote learning to robotics. And we are the proof. हम वो बच्चे हैं जिनके हाथों में बस पेन और पेपर ही नहीं बल्कि वो स्किल भी है जो हमें जीना सिखाती है. आणि आज हा फक्त एक कार्यक्रम नाही आहे. It's a celebration of opportunities and a journey that belongs to all of us. Today, we all have gathered here to celebrate 20 years of building skills. We are thrilled to see you all here to mark 20 incredible years of Lend Hand India. चलिए तो फिर कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और चलते हैं आज के सफर पे. अनीता, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक सवाल, एक सपने से होती है. Exactly. And this journey began 20 years back when someone looked at India's youth and felt they deserve more. They deserve much better. They did not just lend a hand, they built a foundation. Yes. So on this note, let's welcome our dearest chairperson, Shri Milinda Mane sir, our chief enabler, with a huge round of applause and lots of love. Thank you, Anita. Thank you, Vishal. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen, and of course the students. Before we proceed for this function today, we woke up today with a grand shock to all Maharashtrians, and we lost the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Dada Pawar, in a small aircraft crash at Baramati Airport, in which we lost him. So I would like to say something about Ajit Dada Pawar, महाराष्ट्राचे उमदे, तडफदार, साहसी नेतृत्व, कर्तबगार आणि सक्त प्रशासक, सडेतोड, विनोदी पण मिश्किल वक्तृत्व, निष्ठावान कार्यकर्ता व मराठी माणसाचीच नव्हे तर सगळ्या महाराष्ट्राची शान, ज्यांचा दरारा होता पण दहशत नव्हती, अशा अजित पवारांच्या दुःखद निधनाबद्दल मी सर्वांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं सायलेन्स ऑब्झर्व करून त्यांना एक भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहूया. Thank you very much. Good evening once again, and a warm welcome to everyone, and a great pleasure to stand before all of you on this day, 28 January 2026, to celebrate 20th anniversary of Lend Hand India. The story of Lend Hand India begins with two people who believed that every child in India deserves not just an education, but opportunities. I myself is a disciple who got an opportunity to be mentored when I was just 16 years of age, giving me the insight who is none other than my dear sister Sunanda Mane, an Ashoka Fellow with decades of experience in rural development, who has spent her life working with communities in India to bring real world into the lives of young people. For me, she is not just a founder, executive director, but she is my sister who taught me and thousands other long before Lend Hand India was born, and that service and the stubborn hope
are non-negotiable. Raj Gilda, a banker turned into a social entrepreneur, walked away from a successful global career to build an organization that today works with the government across the country to integrate the vocational education into thousands of schools and to reach millions of students. To the world, Raj is a banker turned into a social entrepreneur, but for me, he is a friend, philosopher, and guide. Together, both of them turned one small experiment into the nationwide effort that now partners with multiple state governments and beyond the borders. Thousands of schools, millions of students and their families, and a growing family of supporters like you all gathered today in this room. Tonight, as a co-traveler in this journey, it's my proudest privilege to invite on the stage founder and the co-founder of Lend a Hand India, Sunanda Mane and Raj Gilda, with a standing ovation and a round of applause. Raj and Sunanda, first they made a commitment to themselves and have shown courage which gave them a thoughtful creativity to form an organization, Lend a Hand India, in 2006, which developed several capable people to join in this journey of 20 years and build confidence not only in themselves but also amongst the entire Lahi family and several state government officials. It does not stop there. Today, on this occasion, they have made another commitment to themselves to look forward the continuous another 20 years of journey of Lend a Hand India. Thank you. A very good evening to all of you. Thank you, Milind, for such a prolific introduction. You all know that people closer to you know you really well. So Milind knows me as a sister, as well as now, post his tenure with a financial corporation, now as a chief enabler for Lend a Hand India. So Milind, thank you so much. Thank you so much for your words, as well as devoting your post-retirement years for Lend a Hand India. Thank you. Thank you. I think when we were meeting people at the entrance, 20 years, everybody congratulated, everybody kind of never felt like it has been 20 years. It really never feels like it has been 20 years on a single day, because every day is a new day, every day is a challenge, and every day we see students really bringing something new, different, great out of themselves. And I think that is what keeps us going. So the energy, their success, their being with us for all these years, their schools, their headmasters, their principals, their school management on one side, and I think you all who have been with us when I was meeting different people, I think just a lot of memories that are coming to my mind, and a memory which I just want to share with you, and that is how Lend a Hand India has grown. 2006 we started, 2005, 2006, that was our first school we started, and at that time we were in New York. Our first year budget was $12,000, and then I used to visit India frequently to get started. Raj, ex-boss, and a good friend, a well-wisher, a very, very kind person, Ashish, who is in our midst today. When he heard that we are venturing into this kind of a career now, trying to come back and do this work in India, he underwrote our first 2 years administrative expenses. It was so nice of him, so kind of him. So
this is just a glimpse of what Ashish did for us. He has been a very kind person and a very considerate person. He has been a guide and philosopher, not only to Raj, but to the organization as well. So thank you, Ashish, for that beginning, because that gave us courage, that gave us a base, that gave us that in India also we can get started and survive. I think that's 2006. Today we are in 2026. Many more people, many well-wishers, many CSR managers, many funders. And I think they are not our, what we say, CSR managers or founders or supporters, but I think they are our partners. They are our partners in the success that we have been able to achieve in all these years. So thank you from the very bottom of our hearts for being able to reach here. It is all a partnership project, and it's, you are a big part of this journey. And as Milind said, I think this is the beginning. A dream which we saw in 2006, I think has come long way. What we started integrating skill education with schooling has now become a reality. National education policy now says that every child in the country should have skill education starting from grade 6. And I think that's a huge commitment. It needs all the good wishes, all the support, everyone to join us in this great moment, I think, which is going to be probably the change maker, which is going to take India to the next level. All the dreams of young people, I think if they want to become true, I think we have to work hard for that. So thank you so much again for making time today to come here, bless us, wish us, and the only request is to continue to be with us for the years to come. Thank you. Thank you. Good evening. I think one of the main objective of today's program was to let people know that Sunanda exists. Because I think many of you know me as a face of the organization, but I'm like a typical husband, claiming credit for all the good work done by our spouse. So that's Sunanda for you, the brain and brain and soul behind Lend a Hand India. And of course, a venture like this cannot happen. Taking risky decisions in life of quitting jobs and other things and all cannot happen unless both the life partners are totally sort of aligned on what we want to achieve. So first of all, many thanks to Sunanda here. I would also like to welcome Kalpana here. Kalpana Morparia, our very good friend. As Sunanda mentioned, Ashish became our first lending support as we moved to India. And in fact, not only administrative expenses, Ashish being the thorough finance professional, was there, Raj, aapka ghar kaise chalaoge aap, and all. And I worked with BSc for first 2 years, Bombay Stock Exchange, when Ashish was at the helm of the affair. So not only the administrative expenses, but home expenses as well. So I think without such support, we could not have made it where we are today. And then followed by Kalpana here. Kalpana was at the helm of the JP Morgan Chase at the time, and I'm very glad to share that they are our longest supporting partner now. We're entering the 13th year of our partnership. You can imagine, such a long partnership are very rare to make it happen, but Kalpana and her colleagues are the true reason behind it. And today also, whenever we meet with Kalpana, she has 10 different people she wants us to connect to. She has already connected, and such a huge support. And I think whatever we are today is because of our friends like Ashish and Kalpana here today. So thank you, thank you so much. And of course, I would like to congratulate our awesome MCs for today. Anita and Vishal, both are hiding behind the such a big banner here, but looking forward to you being our MC for today. Okay, thank you. अच्छा हुआ 20 साल पहले सर ने और मैम ने मिलकर लेंड हैंड इंडिया की शुरुआत की, वरना ना आज हम दोनों यहाँ पे खड़े होते,
ना हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे जो कहीं पे खुद को इतना प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ कर पाते हैं. वैसे अनीता, बात 20 साल की चल रही है. तब तो मैं पैदा ही हुआ था. थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपन इन लाही ओवर द लास्ट 2 decades makes me curious. अरे विशाल, don't worry about being the baby of the group. Do you really want to know what happened? ऑफ कोर्स. आणि हा समारंभ मुंबईमध्ये होत आहे, त्यामुळे हा आणखी स्पेशल आहे. कारण लँड हँड इंडियाच्या बऱ्याचशा उपक्रमाची सुरुवात ही महाराष्ट्रातून झाली आणि त्यानंतर पूर्ण देशभर पोहोचली. एकदम बरोबर बोललास. चला तर मग लेट्स ट्राय टू ट्रॅव्हल थ्रू दिस 20 years सफारी इन जस्ट फ्यू मिनिट्स. लेट्स वॉच दिस. Founded by Sunanda Mane, a development professional, and Raj Gilda, a corporate executive, Lend a Hand India, or LAHI, was born from the fundamental questions: what if every child in India could learn by doing? What if schools also taught the skills of life and work so that confidence, curiosity, and character grew with every passing grade? Lend a Hand India's mission is to integrate skill-based, hands-on learning into mainstream school education. If education is a change maker, we have so many institutions, so many universities, so many colleges and everything. Why such a huge youth unemployment? India has a huge population dividend, and actually to encash this dividend, we need to address this challenge of gap between our education and the requirement of the job market or employment market. So that is definitely one reason, and this should be done at scale. It should be the model or the solution should be applicable across the country, and I would say not even across the country, but wherever such challenges exist in the world, I think such a model needs to be created. Of course, starting with India, and that is how, in a very small way, in 2005-06 academic year, we started on a very small scale. Inspired by the noted scientist turned educationist, Dr. S.S. Kalbag's hands-on skill-based education model at the Vigyan Ashram, LAHI founders Sunanda and Raj sought to bring about a similar transformation to mainstream education. LAHI launched Project Plan 100 in 2006, introducing the Introduction to Basic Technology or the IBT program, originally meant for dropouts, into 100 mainstream schools as a module under the SUPW subject. An independent assessment by the Sir Dorabji Tata Trusts validated the impact of the Project Plan 100. That same year, co-founder Raj left his corporate career to focus full-time on LAHI's mission. The Government of India formally recognized skill education in schools through the National Skills Qualification Framework. The IBT course was adapted as the Multi-Skill Foundation course, gaining official recognition with the support of the Government of Maharashtra. After successfully implementing skill-based education in about 100 schools across 5 states, LAHI transformed Project Plan 100 into Project Swadhin to expand its reach. In 2015, the program was introduced in government schools, starting with 10 Pune Municipal Corporation schools, and in the next year, in 10 Bombay Municipal Corporation schools, establishing a model for government-run public schools. As LAHI deepened its collaboration with government systems, it launched Project Catalyst in 2015 to scale vocational education in schools through technical and managerial support to state education departments, assigning full-time LAHI team members at no cost. LAHI became the knowledge partner for the state, assisting in policy design and program implementation. Over the 5 years from 2016 to 2021, LAHI built such partnerships with 24 state governments. In 2021, LAHI launched a 6-year systemic intervention
to collaborate closely with state education departments, contributing to policy and on-ground improvements to scale skill education with quality. This contribution of Lahi was recognized in the Economic Survey 2023-24 by the Government of India as an example of civil society's role in advancing the goals of the National Education Policy 2020. With a strong foundation built, Lahi entered a decade of innovation, partnerships, and nationwide impact. In 2016-17, Lahi launched an internship program to provide students world of work exposure and vital life skills. The program connected students with local micro and small enterprises for 80 to 100 hours of hands-on work experience under the guidance of employers. I started my internship from 11th of April and now it's going very good. I have gained very much interest in banking and all. So in this whole all over journey, I learned how to open RD account form and voucher, SD account form and voucher, then a fixed deposit, how to take online light bills and give receipt to the client. Before internship, I was very shy person and confidence was so much low. But now confidence has gained, professional skills I have learned, then strength, negotiation skills, everything, and I can see myself updated as a new version. Lahi developed Lighthouse, a digital monitoring system providing real-time updates to help heads of schools as well as government officials take timely actions to address the challenges faced during implementation. The Skills on Wheels mobile lab brought hands-on learning to rural and remote communities, serving as both a classroom and advocacy tool for schools, parents, and students. The Karigar School of Applied Learning, often called the Disneyland of Skills, became a model hub showcasing aspirational skills, industry-aligned workshops, and teacher training. Through Project Saksham, it equipped vocational trainers with essential pedagogical and leadership skills to ensure quality of delivery of skill education. In collaboration with Niti Aayog's Atal Mission, Lahi trained teachers in design thinking and innovation, linking them with local and regional engineering institutions for sustained technical support for the Atal Tinkering Lab schools. The NEP 2020 and NCF 2023 make vocational education mandatory up to grade 10, creating the need for large-scale expansion of Lahi's work. To prepare, Lahi launched NCF-aligned pilots to create a workable and sustainable model of multi-sector curriculum across 50 schools in Maharashtra. In collaboration with the SCRT Maharashtra, Lahi is establishing 5 skill hubs at the DIET campuses in Maharashtra, replicating Karigar School of Applied Learning, Pune, as centers of excellence for teacher training and development. In 2023, Lahi partnered with the state of Ondo, Nigeria, marking its international outreach. I think Lahi's mission for next 20 years is quite clear in that. On the one hand, India will become a resource organization going forward. So our role is going to be more like a standard setting organization. Our role is going to be more of a resources providing organization. Our goal is going to be that how do we onboard more and more players, being the ecosystem builder, share our knowledge, share our resources in an open source manner, so that the more and more organizations come on board and take this work going forward. As the NEP 2020 opens huge opportunity, Lahi is poised to universalize hands-on learning for every child in India and beyond. With support and partnerships, we can convert policy into reality for millions. Let's build a skilled tomorrow together.
Wow. So much has happened in the last 20 years, and this took me back to my own journey. Anita, I know that skill education help both of us. जैसे मैंने रिटेल एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा टिल 12th स्टैंड. अच्छा, मैंने भी रिटेल ही पढ़ा था. विशाल, तुझे उसमें सबसे अच्छी कौन सी बात लगी? वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो मेन बात है कि जो जॉब एक्सपीरियंस नॉलेज जो रहता है वो मुझे स्कूल से ही मिलना शुरू हो गया. स्टॉक मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल से ही सीखना शुरू कर दिया. बहुत अच्छी बात है. विशाल, तूने इसमें इंटर्नशिप कंप्लीट किया? हाँ, मैंने मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो कंप्लीट की द केक आर्ट से. उसके बाद मैंने अपना जो फर्स्ट जॉब है वो क्रॉसवर्ड बुक स्टोर में किया. उसके बाद जो चीज़ें मैंने स्कूल में सीखी थी वही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, और आज मैं अपने खुद का वेंचर चला रहा हूँ, क्रॉस लाइन ट्रेक एंड टूर्स. जिसमें विच वी ऑफर एवरी वीकेंड ट्रेक एंड ट्रिप्स with proper planning, local expertise, experienced trek leader and affordable price starting from 1000. अगर आप भी प्लान कर रहे हो वीकेंड में ट्रैक और ट्रिप्स करने का, फैमिली, ग्रुप या फिर सोलो हो, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे टीम से कनेक्ट कीजिएगा. राइट? सही है. मौका भी है और दस्तूर भी है. कर लो थोड़ा फ्लॉन्ट. हाँ, रिटेल सीखा हुआ बंदा हूँ, थोड़ा तो करूँगा ही. अच्छी बात है. वैसे विशाल, आई एग्री विथ यू. हम वोकेशनल एजुकेशन हेल्प मी एज वेल टू डिफाइन माई करियर. मैंने भी रिटेल एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने स्टोर ऑपरेशंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी. उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की. मेरी जो इंटर्नशिप थी वो ग्राहक पेट में हुई. ग्राहक पेट इज़ अ रिटेल स्टोर. Once I completed my 12th standard, I took admission for mass communication and journalism. And at that time, I was looking for a part-time job. और तभी मुझे पता चला कि H&M में पार्ट टाइम जॉब ऑफर हो रहा है, एंड आई अप्लाइड फॉर इट. और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तब मेरे पास बहुत अच्छा रिटेल का एक्सपीरियंस था और मैंने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. कॉज ऑफ दैट मैं सिलेक्ट हो गई और अभी मैं अपनी पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ. तो मैं खुद का खर्चा खुद उठा रही हूँ, इवन अपने फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ. वैसे विशाल, तुझे पता है ना H&M क्या है? नहीं. अरे H&M इज़ अ बिग फैशन ब्रांड. तो मैं आप सबको भी बता दूँ, किसी को भी फैशन टिप्स या फिर डिस्काउंट चाहिए तो मुझसे दोस्ती बनाए रखना. ऑफ कोर्स. वैसे अनीता, हम दोस्त हैं. यस. ये तो हो गई हमारी कहानी. चलो अब हम हमारे दोस्तों की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं. Yes, so the heart of Lahi. Let's hear from the people for whom all of this actually happened. Our amazing students, alumni, and our sweet सी moderator, Bhagyashree ma'am. Ma'am, the stage is all yours. थैंक यू सो मच अनीता एंड विशाल. गुड इवनिंग ऑल, सभी को नमस्ते. तो आज हम यहाँ सभी लेना है इंडिया के साथ उन 2 दशकों के प्रेरणादायी सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. जैसे विशाल और अनीता ने कहा, ये 20 वर्ष उन अनगिनत युवाओं की कहानियों से भरे हैं जिनके सपनों को उड़ान मिली. हमारी संस्था की आशा और भविष्य का प्रतीक हमारे विद्यार्थी. तो आज हम सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं. लेट्स मीट आवर एल्यूमनाई मानसी, जय, आवर स्टूडेंट्स नारायणी, आयुष एंड तन्वी. यस, थैंक यू सो मच. तो अभी अब जैसे आपके मन में सवाल होंगे कि स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया, अनीता और विशाल ने तो बहुत कुछ कहा, तो हम लोग रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो चलते हैं, हम लोग चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं. कैसे लग रहा है? डरना मत, ये सब हमारे ही लोग हैं. ओके, तो आप अपना परिचय दीजिए.
गुड इवनिंग ऑल। ऐसे करें। मेरा नाम मानसी सचिन सातपुते है, मैं पुणे से हूँ। मैंने अपनी 9th एंड 10th डॉक्टर वसंत दादा पाटिल सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की। वहाँ पे मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल था। मैंने अपनी 11th एंड 12th राजीव गांधी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग से कंप्लीट की। वहाँ पे भी मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट रिटेल ही था। एंड इन रिटेल सेक्टर एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड मैंने अपनी 80 आवर्स की इंटर्नशिप एक ग्रोसरी शॉप में कंप्लीट की। आई वॉज अ पार्ट ऑफ स्किल मित्रा कोड 7 एंड नाउ आई एम अ मेंटर इन स्किल मित्रा कोड 8. I am a second year computer engineering student at Vishwakarma Institute of Technology, Pune. Thank you so much. नमस्कार सभी के लिए। मेरा नाम जय मारुति जगताप है। मैं पुणे जिला से आया हूँ। तलेगांव दाभाडे के अंदर वड़ेश्वर गांव में मैं रहता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूल वड़ेश्वर है। 9 एंड 10 कक्षा में मैंने एग्रीकल्चर ट्रेड लिया था। 9 एंड 10 में मैंने सोलनेसी कल्टिवेटर सब्जेक्ट लिया था एंड 11th-12th में मैंने इरिगेशन टेक्नीशियन सब्जेक्ट लिया था। इसी सब्जेक्ट के माध्यम से मैंने अपना खुद का नर्सरी बिजनेस स्टार्ट किया है। हाय एवरीवन, मेरा नाम नारायणी जोशी है। मैं अभी पुणे में रहती हूँ। मैंने 9th-10th में वोकेशनल सब्जेक्ट एज ए रिटेल चूज़ किया था। मैं अभी 11th साइंस में पढ़ रही हूँ। मेरा कॉलेज का नाम SSPM जूनियर कॉलेज है, शिवाजी नगर में। तो अभी मैंने बायफोकल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिया है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम आयुष बर्गे है। मैं सातारा से आया हूँ और मेरे स्कूल का नाम पेरेंट्स एसोसिएशन इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और आफ्टर 10th मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड चूज़ किया था और अभी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर रहा हूँ और साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी सनगर है। मैंने मेरा स्कूल का नाम घाटले BMC सेकेंडरी स्कूल है। मैं उस स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैंने इंटर्नशिप फ़ोटो स्टूडियो में दी थी। मेरा सब्जेक्ट था मल्टी स्किल। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगला सवाल है, आपने सबने वोकेशनल स्किल्स एज अ 9th में सब्जेक्ट लिया था, करेक्ट? तो मेरा ये सवाल है कि जब आप 9th में अपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था तो मन में क्या बात चल रही थी, क्योंकि ये तो नया सब्जेक्ट है। सभी के लिए ये सवाल है। यस मानसी। यस मैम। तो 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास लैंग्वेज स्किप करके 2 ऑप्शंस थे, रिटेल एंड मल्टी स्किल। तब मैंने रिटेल एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअल मार्केट में काम कैसे होता है, रिटेल सेक्टर में बिहाइंड द सीन चीज़ें वर्क कैसे करती है। एंड इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने रिटेल एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। जब मैंने पहली बार एग्रीकल्चर ट्रेड लिया था तब मुझको इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने इस सब्जेक्ट के टीचर से बात किया और उनसे पूछा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है। तो वो बोले इस सब्जेक्ट में ज़्यादा तो ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटिव यानी पेड़ पौधों को खाद देना, पानी देना, ये ट्रिक बताई। थैंक यू। नारायण। जब मैंने 8 के बाद मुझे 2 ऑप्शन दिए थे लैंग्वेज स्किप करके, रिटेल और मल्टी स्किल। तो मैंने टीचर से जानकारी ली कि रिटेल में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाता है। तो टीचर से जानकारी लेने के बाद पता चला उसमें सब बिज़नेस का नॉलेज दिया जाता है। बिज़नेस में मुझे इंटरेस्ट भी था और लैंग्वेज स्किप करने का मौका भी था। और जो एक बात थी, लैंग्वेज में स्कोरिंग नहीं होती और मैंने ये सोचा कि मैं रिटेल चूज़ करूँगी, स्कोरिंग भी होगी और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, इसलिए मैंने रिटेल चूज़ किया। मुझे बचपन से इलेक्ट्रिकल ट्रेड पसंद था और रुचि भी थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड चूज़ किया था। और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सीखने में बहुत कुछ होता है और वो जानने में इंटरेस्ट था बहुत, और आगे जाके मेरे जॉब के लिए भी यूज़फुल हो, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड चूज़ किया था। मैंने जब मल्टी स्किल सब्जेक्ट लिया था तो मुझे बहुत सारा डर लग रहा था क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट था हमारे लिए, कभी हमको पता भी नहीं था। तो जैसे जैसे सर ने बताया उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, वो सब सर ने हमको बताया। और जैसे जैसे सिखाना स्टार्ट किया वैसे वैसे हमको आने लगा। जैसे जैसे सिखाना स्टार्ट किया वैसे हमको आने लगा और हमको वो अच्छा भी लगने लगा कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए है। थैंक यू एवरीवन। तो अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने वोकेशनल स्किल्स तो पढ़ लिए
और इंटर्नशिप्स भी की। तो आप बता देना इंटर्नशिप्स की कहाँ की और इंटर्नशिप से आपको कौन से स्किल्स सीखने के लिए मिले। यस यस मैम, तो मैंने पहले भी जैसे बताया, मैंने अपनी इंटर्नशिप रिटेल सेक्टर में एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट की, पवन सुपरमार्केट इस ग्रोसरी शॉप में। तो इंटर्नशिप के दौरान जब हमें जो सारी चीज़ें हमें बुक्स में पढ़ाई गई थी, वो सारी चीज़ों का मैंने वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट किया। लाइक कस्टमर के क्वेरीज हैंडल करना, उनको रिस्पॉन्ड करना या फिर उन्हें उनके साथ इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की। और टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ हमने वहाँ पे हमारे स्किल्स के ऊपर भी काम किया, जैसे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, उससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें हमें ना कि सिर्फ जॉब या फिर कॉलेज के लिए हेल्पफुल है, तो ये सारी स्किल्स हमें हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मानसी। जैसे कि मैं आश्रम विद्यालय में पढ़ता था, आश्रम के बच्चों को ज़्यादा टाइम बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं थी, तो मैंने अपने स्कूल के हेडमास्टर से बात की और हर रोज़ 2 घंटे बाहर जाने के लिए परमिशन मांगी और मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। इंटर्नशिप पूरी करने का ठिकान संकल्प फार्म हाउस एंड ग्रीन हाउस में मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। इंटर्नशिप पूरी करते मैंने पेड़ पौधों को कैसे कटिंग करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उनको खुद कौन सा देते हैं, पानी देने की टेक्निक, ये सब भी सीखे। तो मैंने 10th के बोर्ड के बाद मैंने इंटर्नशिप की थी भाटी सेल्स मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने सीखा कि ग्राहकों से कैसे कम्युनिकेट करना और ग्राहक को कैसे प्रोडक्ट सेल करना। और जो मैंने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज भी मैंने बहुत ज़्यादा गेन किया, और जो होता है स्टॉक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये भी सीखा मैंने। तो मैंने आफ्टर 10th इलेक्ट्रिशियन के साथ इंटर्नशिप की थी, और पहले तो बहुत नर्वस था, पर आगे जाके जैसे मैं काम करता गया, एक्सपीरियंस लेता गया, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिले, जैसे कि वायरिंग कैसे होता है, बेसिक वायरिंग कैसे होता है, कंसील वायरिंग कैसे होता है, एक्सेसरी फिटिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह। मैंने इंटर्नशिप फ़ोटो स्टूडियो में की थी। फ़ोटो स्टूडियो का नाम था शुभम डिजिटल फ़ोटो स्टूडियो। जिनका वो स्टूडियो था उनका नाम संजय दिनकर पापल, उन्होंने ही मुझे एडिटिंग सिखाई थी। एडिटिंग के साथ मेरे को पीसी कैसा ऑपरेट करना चाहिए, मशीन्स कैसे ऑपरेट करनी चाहिए, ग्राहकों से कैसे बात करनी चाहिए, वो मुझे उन्होंने ही सिखाया था। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे आपने इंटर्नशिप किए। तो मेरा अगला सवाल जो है उसी को लेके है, आयुष और मानसी के लिए। तो आपने इंटर्नशिप तो कर ली, तो इंटर्नशिप से आपको ऐसे कौन सा पल था इंटर्नशिप में कि आपको लगा कि आपका खुद की तरफ देखने का नज़रिया तो बदला और काम करने का नज़रिया भी बदला है? यस। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तब एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे जो सारी चीज़ें थी वो इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी पड़ी। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ थियोरी तक लिमिटेड नहीं हूँ, मैं रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी हैंडल कर सकती हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो जब मैंने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड जो स्किल्स है वो मुझ में डेवलप हुए, एंड विद दैट स्किल ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड माई एजुकेशन आई हैव स्टार्टेड माई इंजीनियरिंग जर्नी। So I realized that I am not limited to theory only, but I can also face the real world challenges. तो आफ्टर इंटर्नशिप मुझे एक खुद का काम मिला था, जो कि मैं पहले सोचा कि ये कर पाऊँगा या नहीं, पर आफ्टर वो कंप्लीटिंग जॉब मुझे पता चला कि इंटर्नशिप मैं नहीं करता तो ये जॉब मैं नहीं कर पाता। थोड़ा बता पाओगे कि क्या काम मिला था आपको फर्स्ट? एक बेसिक वायरिंग था, मुझे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का बेसिक वायरिंग, बेसिक से स्टार्ट था, कंसील वायरिंग। और वो पूरा आपने खुद ने किया? खुद ने किया। ओके, थैंक यू सो मच। आगे चलते हुए अगला सवाल है जय और नारायणी के लिए। वोकेशनल स्किल में तो टेक्निकल नॉलेज मिलता ही है, तो उसके साथ आपने ऐसे कौन से लाइफ स्किल्स सीखे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ भी हो रहा है? जय? जैसे कि मैंने 9th-10th कक्षा में मैंने इंटर्नशिप पूरी की, 9th-10th कक्षा में, एंड 11th-12th में मैंने अपनी 4 साल में इंटर्नशिप पूरी की। इंटर्नशिप पूरे करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि ग्रीन हाउस में मैंने अपनी इंटर्नशिप की। ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में जैसे गुलाब के झाड़ रहते हैं, गुलाब की कटिंग सीखी, और
कटिंग पेड़ पौधों को पानी कैसे देते हैं, उनको क्या कीड़ आता है, ये सभी औषध की जानकारी ली और अभी मैं अपने नर्सरी में ये सब ट्रिक यूज़ करता हूँ। थैंक यू जय। जैसे मैंने इंटर्नशिप के दौरान फाइनेंस का भी सीखा, मतलब मैंने IDFC, होम क्रेडिट, बजाज, कोटक, इसमें लोन करना भी सीखा। वैसे मैंने डे टू डे लाइफ में भी कुछ स्किल सीखे, जैसे कि मैंने कम्युनिकेट करना सीखा। मतलब जो मैं आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उस इंटर्नशिप की वजह से ही है जो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है, और जो मैं आपसे आज बिना डरे बात कर पा रही हूँ वो उसी वजह से है। और जो अदर चीज़ें थी, जैसे कि फिर से मैं कहूँगी टाइम मैनेजमेंट, और जो एक मेन चीज़ है वो है पेशेंस। क्योंकि अगर हम कस्टमर से डील करते हैं तो वो कस्टमर को डील करते हुए हमारे खुद में पेशेंस लाना ज़रूरी है। अगर कस्टमर से आप ऐसे चिढ़ कर बात करेंगे तो कस्टमर डील नहीं हो सकता है, इसलिए खुद में पेशेंस लाना ज़रूरी है, और ये डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच नारायणी। तो अगला सवाल है मानसी और जय के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा अलग अलग सफ़र है, किसी ने खुद का वेंचर स्टार्ट किया है तो कोई हायर स्टडीज़ कर रहा है। तो सवाल ये है, वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटर्नशिप्स ने आपको आपके करियर चूज़ करने में कैसे मदद की? वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप ने मुझे रियल वर्क एक्सपोजर दिया, जिससे मुझे अपने गोल्स के बारे में क्लियर जानकारी मिली। लाइक व्हाट शुड बी माय फाइनल गोल, मुझे अपने स्ट्रेंथ के बारे में, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में एंड अपनी स्किल्स की बेटर समझ आई, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अपना पाथ चूज़ किया। तो कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर ट्रेड हो या फिर हायर एजुकेशन ही क्यों ना हो, वोकेशनल एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, एंड उसके साथ हम क्लियर माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस के साथ हमारी जर्नी एंड हमारा करियर स्टार्ट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने 9th 10 कक्षा में एग्रीकल्चर ट्रेड लिया था, वैसे 11th 12th में मेरा एग्रीकल्चर इंटर्नशिप पूरी हुई और मैंने 4 साल हो गए, और इस चीज़ की मुझको ज़्यादा लगा हुई। जैसे कि मैंने सोचा कि इस चीज़ से मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने कटिंग करना सीखा, फिर गार्डन का काम लिया, लॉनिंग का काम लिया, फिर मैंने माली काम किया। वैसे स्टेप बाय स्टेप करते गया, कुछ पैसा इकट्ठे करके गया, फिर फाइनल प्रॉब्लम आया नर्सरी खड़ा करने के लिए, तो मैंने कुछ दोस्तों से किराए पे पैसे लिया, फिर मैंने खुद का नर्सरी स्टार्ट किया। बाद में धीरे धीरे नर्सरी ग्रो किया और अभी मैं 40,000 रेंट भर सकता हूँ। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जय की नर्सरी है खुद की, जो हाईवे पे है तड़ेगांव दाबाड़े के पास, और 2.5 एकड़ में नर्सरी है, और वो 40,000 रेंट पे करता है, और खुद के बलबूते पे सब उसने किया है। यस, थैंक यू। तो अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी के लिए आंसर्स भी सुनने के लिए इंटरेस्टिंग है सभी। तो सवाल ये है, आप उन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स जिनको लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन इज द सेकेंड ऑप्शन, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यस, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज नाउअडेज स्किल्स मैटर्स मोर दैन डिग्री। आई एम नॉट सेइंग दैट डिग्री इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट डिग्री के साथ साथ हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि स्किल्स ही डिसाइड करती है कि हम रियल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से स्किल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स एंड अगर हमारे पास स्किल्स है एंड डिग्री है तो हमारे पास ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ज़्यादा होती है। जैसे कि आज के ज़माने में मैं उन छात्रों को कहना चाहता हूँ कि नौकरी की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप नौकरी से घर तो चला सकते हो, मगर आप खुद के सपने पूरे नहीं कर सकोगे और आपको खुद को वक्त नहीं दे सकोगे। वैसे आप व्यवसाय क्षेत्र में आएंगे तो आप खुद मालिक बन सकोगे और आप सपने पूरे कर सकोगे और दूसरों को नौकरी पर रख सकते हो और आप अच्छे एक बिजनेसमैन कहला दे सकते हो। इसके दौरान आप शिक्षकों को, बच्चों को आत्मविश्वास देना चाहिए और माता पिता ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। थैंक यू। नारायणी? एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, मोस्टली प्राइवेट स्कूल में ये वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो थैंकफुल कि मुझे ये वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया गया। तो मैं एक आपसे विनती करती हूँ, जैसे आज मैंने इंटर्नशिप की, जैसे मैंने आज वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा, वैसे हर एक
बच्चे को आपने प्रेरित करना चाहिए, या फिर मैंने भी सब बच्चे सकते. सॉरी सॉरी. आयुष मराठीत बोल, मी ट्रान्सलेट करते. येस. ठीक आहे सर. मी त्या पोरांना आणि त्यांच्या पॅरेंट्सला सांगायचं आहे, ती जे मानतात की सेकंड ऑप्शन असलं पाहिजे वोकेशनल सब्जेक्ट, ते चुकीचं आहे. कारण की एक कुठलं तरी एक वोकेशनल स्किल असली पाहिजे ज्याच्या बेसवर आपण एक साईड बिझनेस स्टार्ट करू शकतो आणि एक इन्कम घरात देऊ शकतो. थँक्यू. आय थिंक एव्हरीवन अंडरस्टँड. येस. मला असं वाटतं की व्होकेशनल सब्जेक्ट हा सगळीकडे असला पाहिजे, कारण काही मुलांना तो सब्जेक्ट माहीतसुद्धा नाही आहे. म्हणजे मल्टी स्किल काय आहे, रिटेल काय आहे, हे कोणालाच अजून गावच्या साईडला किंवा मुंबईमध्ये काही मुलांना माहीत नाही आहे. तर सगळे लोक विचारतात की मल्टी स्किलमध्ये काय आहे, रिटेलमध्ये काय आहे. तर मला असं वाटतं कि सगळ्या स्कूलमध्ये तो सब्जेक्ट असला पाहिजे. थैंक यू. मैं ये ट्रांसलेट करती हूँ. तो तन्वी का कहना है कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक वोकेशनल स्किल या मल्टी स्किल क्या है, रिटेल क्या है, 9th में कैसे पढ़ते हैं, ये पता ही नहीं है. बहुत कम स्कूल में अभी वोकेशनल स्किल्स रन हो रहे हैं. तो हर एक बच्चे के स्कूल में उसे ये वोकेशनल स्किल्स मिलनी चाहिए. करेक्ट तन्वी? यस. थैंक यू सो मच. तो हम लोग सभी ने देखा वोकेशनल स्किल और इंटर्नशिप्स सिर्फ स्किल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस, डिग्निटी ऑफ लेबर और रियलिटी के बारे में एहसास दिलाती है. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन. अगर आपको किसी को भी और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो अपने स्टॉल पे सभी स्टूडेंट्स अवेलेबल है. प्लीज कनेक्ट विद देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अनीता. That was super amazing. Hearing from our friends make it all real. और अभी जो मानसी को हमने सुना उसको मैं 4th स्टैंडर्ड से जानती हूँ, और हमारे जूनियर्स को खुद को इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हुए देखने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा. सो वंस अगेन गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. वैसे विशाल, आई डोंट थिंक आई विल एवर अटेंड एन इवेंट लाइक दिस वेयर so many people have come together from different walks of life. सही है अनीता, मैं भी ऐसा इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख रहा हूँ. वैसे एक फन फैक्ट बताऊँ? नेकी और पूछ पूछ. बताओ बताओ. लेंड हैंड इंडिया के नाम में इंडिया है और काम तो इंडिया में ही है, लेकिन इसकी शुरुआत ना न्यूयॉर्क में हुई थी. क्या बात कर रही है? न्यूयॉर्क? ऐसे कैसे? अरे रुको ज़रा, सब्र करो. इस सवाल का जवाब और ऐसे कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स एंड फन स्टोरीज के साथ लेट्स इनवाइट राज सर ऑन द स्टेज टू हेल्प अस टू लिव सम ऑफ दीज मोमेंट्स. So much. Thank you so much. What a great fun evening it has been. I know as per IST we are running about 25 minutes late, so please bear with us, but I hope you are enjoying the programming, today. Would like to start first, by welcoming Ashok, my dear friend Ashok Vaswani here. We are going to talk about my journey in New York, but it started with Ashok interviewing me for a job with Citibank. So I worked with him earlier in the Citibank, and as you can see, I have made my ex-bosses, good friends. So that's a key to success in life, that how do you make your, ex-bosses to take them along in journey with you. So thank you, Ashok, for being here today. So Shuruat, the foundation day.
That's where, this was the day back in 2006, where you see, the fifth person was taking a picture. So there were 5 of us who got, started as well. And the person whom we can see here, so this is Sunanda. You may not recognize, this is me. And this is Nirmal. I'm very happy to say that Nirmal's brother, Devin, is with us today. Devin, I can't see you. Where are you? So can we have a mic to Devin, please? No? So and Devin has been my hostel mate. He was my engineering, batchmate as well, roommate rather, and has been our sort of, first call of, support. Whenever we have, needed something, I always jokingly call him our rainmaker, and all that. So Devin, please, would love you to say few, only good things, okay? Not Yeah. No, I'm your hostel mate. I know a lot of things. Yeah, but I guess, the dedication that Sunanda and Raj has is something that we all envy, that, we should all have. And something like this is, I don't know how to say this, but this is amazing. This is something that we have not thought of when they started. Oh, thank you, Devin. So moving to the next. So this is New York Marathon. I think, I must share with you guys that, once our $500 contribution, which each of us had made, $100 each ran out, then the first funding came by me running the New York City Marathon. I know you may not see that I would have run a marathon ever in my life before, but I did, I have a certificate to show for that as well. And we raised $5,000 through, sponsorships and otherwise. And that's where my third employer, comes into play as well, because I was working with Deloitte Consulting, at that time, which sort of helped me to give you the sponsorship and otherwise to go through this. So very thankful for that as well. Followed by the New York events, here. हम लोगों ने बहुत सारे इवनिंग इवेंट्स किए. इफ़ यू आर सीइंग दिस इवेंट इज़ प्रोफेशनली मैनेज्ड. हम 20 साल से ये सब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जब से पहले से न्यूयॉर्क में सब पैसा खड़ा किया तब. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड नीपा दत्ता हियर. नीपा, नाउ दिस इज, इवन दो 2011 का पिक्चर है, तो अभी भी ऐसी दिख रही है अभी नीपा. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग? शी लिव्स इन मुंबई नाउ. And a huge volunteer. In fact, when she came today, she was afraid that I'll put her to work on the registration desk or somewhere. I used to do that back in New York at that time. So Nipa. Trust Raj to put people on the spot. But it seems amazing. Yeah, 20 years back, I remember the day when you guys started also. We started small, few people. Couldn't ever imagine that this will come to this scale. But enjoyed every minute of it, when we started with small, evenings for fundraising, and where Raj infamously put us through a lot of work. But to now, when I came and I was really looking to do something, but I saw everything so well managed. So great to be back here, and hope to see the journey for 20 years. And same here with Sunanda. Thank you, Nipa. Thank you. Today we also have Jay Thakur in the room. Jay, where can I see you? There he is. Can we get the mic to Jay, please? So Jay Thakur, again my Citibank, colleague. And when me and Sunanda actually thought about, Lend a Hand India, we remember walking to Central Park and sitting under a tree and sort of explaining to him what we are thinking about. So Jay has been privy to right from the thinking days that what we want to do with Lend a Hand, and he came up with the first sponsorship for one of the first schools that we worked with. So Jay, a few words from you today. Thank you, Raj. Yeah, I'm seeing Ashok, back in New York days. But yeah, the funny thing is when I walked in right now, Sunanda greeted me, Raj greeted me, and I said, I remember sitting under that tree in Central Park, and they were running the idea by me and I think someone else. I can't remember who else was in that group, but about 4 of us were sitting under Central Park under a tree. And it's amazing to see where Lend a Hand has reached from a concept
to like how Nipa said, I remember all those happy hours in New York where we raised money for two drinks. You know, we would charge people for 2 drinks, and then 1 drink was the money that we kept, and 1 drink actually. Don't share all the secrets. So, so you know, from those days to today, it is just amazing. I have this brochure for your center in Pune. While I don't go often, but the next time I'm in Pune, I have to come and see the center. It looks so amazing. But from those small beginnings to where we are today, just fantabulous. Great. Well done, guys. Thank Well you, done. Jay. So we spoke about, you know, as you can see, my past employers, Deloitte, National Stock Exchange, Citibank have been a great, you know, a partner in our journey. This is the first office table, by the way. So Lend Hand की शुरुआत इस office table के वहाँ हुई. Earlier, Milind spoke to us, our chairperson. So this was Milind's conference room, which was not used during the daytime. And he sort of, you know, and that table is around which we used to sit for many long, you know, sort of years. We still have the table in our office to make sure that we don't forget, sort of, you know. Oh, I mean, as usual, I was not working, you know, just taking picture and and all. But, you know, I mean, we have still kept this table in our office even today after 20 years to remind us that where we came from, and we should not forget our sort of, you know, roots. So thank you, Milind, for lending the table, you know, first of all, to us. This is the launch of Plan 100. This is the, you know, we launched our program in 100 schools across Maharashtra. And today I'm very happy that one of the schools, Koleshwar Vidyalaya, Tandurwadi, Mangalapur, is also here today as part of the, you know, lab setup that you saw. If you can, you know, can you say a few words, sir? You know, kaitari sanga to me. So these are the pioneering schools. You know, the reason these schools are very special, because this they did 20 years back. You know, now that is a national education policy, and there is a funding, and there is a regulation around it and all that. Everybody will do it. But these were the schools which did it, you know, much ahead of the time, and with self-funding. You know, there was no kind of funding also available. Sir, सांगणार तुम्ही काही? लेड हँड इंडिया या संस्थेला 20 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि आमच्या विद्यालयामध्ये श्री कोलेश्वर विद्यालय, तांदळवाडी, मंगळापूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या शाळेला 17 वर्ष या ठिकाणी हा विषय सुरू करण्यामध्ये लाही संस्था, लेड हँड इंडिया कंपनीचं सहकार्य, मदत, मार्गदर्शन हे आम्हाला लाभत असतं. या ठिकाणी 2007-08 या वर्षापासून माहिती तंत्रज्ञानाची ओळख हा विषय या ठिकाणी सुरू झाला. त्यानंतर 2014-15 पासून लाहीच्या मदतीनं मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स या विषय सुरू झाला. आत्तापर्यंत आमच्या विद्यालयातील 700 विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी हा कोर्स पूर्ण केलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये बरेच विद्यार्थी, एक 50 विद्यार्थी डिग्री झालेले आहेत, एक 72 विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्स पूर्ण केलेला आहे, 20 विद्यार्थी व्यावसायिक आहेत, आणि 12 विद्यार्थ्यांनी आपल्या हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स पूर्ण केलेला आहे. आणि बरेचसे विद्यार्थी हे ITIला या ठिकाणी, आमच्या ग्रामीण भागातील शाळा आहे, ITIला या ठिकाणी जात आहेत. आणि यामुळं आणि या लाही या संस्थेनं 2016 साली या ठिकाणी आमच्या विद्यालयामध्ये त्या तालुक्या जिल्ह्यातील ज्या शाळांना जीवन कौशल्य देणारे जे विषय आहेत त्या सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सुसज्ज अशी इमारत या ठिकाणी बांधलेली आहे, प्रशिक्षण केंद्र बांधलेलं आहे, की जेणेकरून सर्व प्रशिक्षक या ठिकाणी त्या ठिकाणी मुक्काम करू शकतील. आणि आता या चालू वर्षामध्ये आम्ही या ठिकाणी एक आदर्श कार्यशाळा या ठिकाणी बांधकामांचं पूर्ण होतं आहे. म्हणजे हे लाहीच्या सर्व मदतीनं मग या ठिकाणी जे आमचे निदेशक असतात त्या निदेशकांचं मानधन असेल, या ठिकाणी प्रात्यक्षिकासाठी लागणारा खर्च असेल, किंवा वेगवेगळ्या विभागासाठी लागणारा खर्च असेल, ही लाही संस्था या ठिकाणी आम्हाला देत असते. लाहीचं मोठं सहकार्य आहे. लाही एक समाजभूक किंवा आमच्या या ठिकाणी ग्रामीण भागातील मुलांना चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण देण्याचं काम या ठिकाणी लाही संस्था करते. त्यांचा शतशः आभार आहे. Thank you, sir. Thanks for being the pioneer for us. Next was starting with, you know, Dasra. I think when we came to you, when I was thinking of quitting my job with Citibank, I think Dasra was conducting a one-year program for the upcoming NGOs, and that was I signed up for. And I used my my vacation
in US to come to India and spend time with the Dasra workshop. So Deval, he had to leave early because he had some other funder to catch, and I can I could let him go because I know I am also a fundraiser. तो to this project for exactly 5 years, and we started with this Plan 100. Axis Bank was the one which was supporting this Plan 100 project, wherein Lahi was an on-ground implementing agency. And I'm so happy to see the transition that, right from the on-ground implementation, where Lahi has reached, where it is now influencing the policies and also demonstrating the scalable models. So very happy. I still remember those, balance that I had to do as a corporate funder, and also a very passionate person at an individual level. So me and Raj, Sunanda have so many memories and so many hair pulling exercises we have done to balance between the corporate expectations and on-ground realities. But it was an amazing, amazing journey. Thank you and all the very best. Thank you. And my secret of keeping Nilima happy was the vada pav you get on the way to Satara. तो फील्ड का तो चलता रहेगा, लेकिन जितना उनको वड़ा पाव खिलाया तो we had a very good result out of that. So thank you, Nilima here. Next, the Great Eastern Shipping, CSR, their arm, and Unni is here, today Swarnima and Prabir. All three are here. So Unni, can you be the sort of representative to share something about us? उन्हीं का ये मुझे लगता है कि AI से मॉर्फ करके हमने उसको आधा ये बना दिया. उन्हीं here. Yeah, this is a surprise, but knowing Raj, I knew that something like this will happen. But I think it's an incredible evening for us, because there are some people in your life, when you meet them, you know that they are going to do really big, and I know it's a great privilege to be part of their journey. So Raj and Sunanda clearly, in the first meeting we knew that they are in that category, and very, very dear partners, and we are just waiting for the next moment to get them back to our portfolio. So Great Eastern, every year we have this annual partners meet, and ever since
we ended our partnership with Lend a Hand. That party we have is never, having the charm, and we are hoping that, Raj and Sunanda will join us back very soon, and all the best. 20 years is nothing, Raj. We are waiting for the 50th year celebration, and do really well. Thank you. Thank you. And I must say, Great Eastern, whoever are the funding partners, they used to get invited for annual dinner, event at the Great Eastern office by, Marine Drive. And that was the biggest attraction for me, So I was very sad when our agreement ended, because then you could not get invited for that, dinner party. So I keep telling Unni ki abhi paisa de do, just so that we can get invited to such a wonderful food hosted by the Sheth family here. Thank you. MacArthur Foundation. I think this is the first time, that by the time we had just started working with the government and, the whole project Catalyst that we speak about today very proudly, the MacArthur Foundation, Mautishi Sengupta and Deepanak Chaudhary, they were also the first ones to, teach us the ropes of working with the government, and especially Deepa. I must say, I wrote our first serious proposal of working with the government in getting funding while working with Deepa. And she was so horrified to hear, read my first draft. She said, never in life anybody is going to give you, any money if you write a funding proposal like this. Then she literally spent on a Sunday morning 2 hours going through what all should happen, how I should write and all that. And that really has become a base of our work, for many years forward. So very thankful to Deepa for teaching me how to write, funding proposal as well. And that is how, Lend a Hand has grown, because our funding partners are really a true life partners, true journey together. And otherwise we would not have been here without them. JP Morgan Chase, here. We also, I started with Chris Cooper, then Manisha Chadha, then Saurabh and Sonia. I would say that, normally when a change of guard happens in a funding partner, you wonder what will happen, to the relationship, because the person is new, they will understand work and otherwise too. But I'm very proud to share that even though going from Chris to Sonia now, the partnership remains really strong, and very, very proud to be here, and very happy that Kalpana, you are here as well, right? So, Manisha, can we have you say a few words? And it's very risky to have Manisha say anything openly like this, but I'm going to take that risk. Is she here? Acha. Sonia? I feel safer with Sonia. I wish Manisha were here. Okay, so I've entered the partnership pretty recently, and I think for me it started with listening to the entire, the journey with between Lahi and JPMC, and how incredible it's been, and reading about it. But I think I got onboarded completely last year when I went on a field visit and interacted with the kids. I think it was one of the highlights that I had last year, and if that's the work Lahi does nationwide, I think it should continue for, similar to what the gentleman behind said, at least for 50 years more. So yeah, thanks. Thank you. Thank you, Sonia. Oh, sorry. Don't worry, I want to make you speak again. And must mention Manubhai Shah and Rikaben Shah from Sarva Mangal Family Trust. They are a family from US, based in California, have been a huge supporter for us. I met Manubhai at an event like this. He was a panel discussion, and you must look him up, Manubhai Shah. He chemist by from Mumbai, chemist, and Rikaben, a high school teacher, science teacher, and they started on their own in about 1980s in a marble business. So the Vietnam War Memorial in Washington DC, the black granite has been supplied by Manubhai, and his company. And today, 40% of Home Depot is one of the biggest, houseware chain. That marble is supplied by SMFT Trust. So a huge inspiration for all of us, and a huge sort of, supporter here as well. MSDF, Geeta, Samar Bajaj, Gaurav, MSDF has been a great funding partner for us as well for the internship program.
Co-impact has been another milestone, for us, because they are the one who, the whole system change approach, as we say, working with the government, working within, and how do we make the change happen. So Rakesh, Yasmin, Cappy, and Doris is the current account manager now, has been a great partner to be where we are sort of, today, followed by the Brisbane group, So when we are writing the Co-Impact grant, Co-Impact requires a 1 year of developing business case and then submitting it to it. You get a grant for that. And if they like the business case, they'll fund for the entire next 5 years. So it's a very, very critical critical task. And Soumitra, he had to leave early, was with Brisbane at that time. And Kashyap was the manager, at that point. They helped us to write the entire investment proposal for, sort of Co-Impact, through which we got our biggest grant, ever of 50 crores over next, or over 6 years. And Kashyap was a manager at that time in the proposal. Kashyap, are you here still? Achha, he has left. I wanted to claim credit because he's partner now. And I said the work he did for us is what made him the partner. But thank you, Brisbane. Of course, Bajaj. Hamara Bajaj. In that we are Pune-based NGO. So nothing can happen without such a huge support of the family, right from Bajaj Auto with Pankaj Ballab, then Shubham, Rashmi, and Kurush. Kurush was here earlier. Not sure whether here or not, but they have been a great supporter. Again, our partnership is in 9th year now of Bajaj Auto with the Bajaj Group, and could not have done without them as well. UBS and Credit Suisse. Credit Suisse got acquired by UBS, but we have Rohit Kamra, Sharmin, and Ashish as well here. Are any of you here? Rohit, Sharmin, Ashish? No, I saw them earlier. No, Rohit. So Rohit was with UBS, at the time. And we love people moving around because now he's with another company. So he'll give us another CSR, Certainly, it's been, great seeing Lahi progress so much. I think my association with Raj and Sunanda goes way before UBS. I'm also an ex-City banker. And, I think some of the other, colleagues spoke about being involved early days of fundraisers, etc., and all that stuff. So I think our association started in New York, yes. And then I think has continued, yes, and I'm looking forward to basically, partnering over the next 20 years or 30 years of Lahi's journey. Yes. Thank you. Thank you, Rohit. And as I said, Tata Trust came back, to support us. And the good news is they added 2 zeros to the earlier grant, in that, right? So we got a grant from Tata Trust 3 months back to actually again launch a 100-school pilot to try out NEP 2020, the National Education Policy 2020. We are going to work in 100 schools of Vidarbha, and that is what they are supporting us for next 3 years now. So very thankful for them coming back, now. And I hope they keep adding zeros on the right side, in that. Our state government partnership is the very first MOU which Sunanda is, signing, which was with government of Maharashtra. And I think government of Maharashtra has been you can say, our school, how to work with the government. We must thank the government of Maharashtra to give us an opportunity to be whatever we are today, because that would not have been possible, without it. The Department of, Education, unfortunately, Ashwini Bhede madam, then Suvarna Kharath, Manisha Verma, variety of bureaucrats who are going to be here today, but unfortunately they cannot be here because of Ajitdada Pawar's, untimely demise. But Ashwini Bhede was Secretary of Education for 8 months, and all. And if you have known her, she's a lady behind the Eastern Express Highway, MMRDA, very, very action-oriented, and way she could achieve the very first milestone about having a vocational education or vocational subject 100 marks on the school timetable is what happened during her tenure. So very, very thankful to her. And of course, she is now in Chief Minister's office, so continue to support us, and very, very thankful for that. Dr. Suvarna Kharath, she is like my guru.
of working with the government. I still remember the days when I used to sit across table from her with Dr. Sona Kharat. She was the state project coordinator for Sarva Shiksha Abhiyan at that time, and really learnt all the tricks of the trade, how to work with the government. She was very open to teach and otherwise. I wish she was here today, as well. Srinivas Sastri, another colleague from, Dr. Kharat's team, again teaching me the ropes. Then Meenakshi Raut. Meenakshi Raut was education officer for Pune Municipal Corporation. So imagine in November 2014, अश्विनी बेड़े मैडम ने बोला कि राज अभी क्या करना है आगे, तो बोला मैडम हम ये 10 PMC स्कूल में प्रोग्राम शुरू कर देते हैं. Imagine this is in November in a academic year which goes from June to March, and all. And it is only because of Meenakshi Raut ji कि हम वो PMC में 10 स्कूल का पायलट कर पाए, which sort of gave us such a huge learning to take it to the thousands of schools. So very, very happy, very thankful to Meenakshi Raut ji and Deepak Mali as well. And the current commissioner now. I think Maharashtra today is really blessed with very, very, very capable bureaucrats, especially in the Department of Education, starting with Sachindra Pratap Singh, who is the commissioner. Then, Sanjay Yadav ji, who is a state project director for Samagra Shiksha Abhiyan, now. And Dr. Rahul, Mr. Rahul Rekhavar, who is the director of SCRT. SCRT is the State Council Education, Research and Training, which is going to play such a huge critical role going forward in the policy, years to come. And our department partnership with Ms. Manisha Verma, she also was going to be here today, could not be there. I still remember, if you're looking for a sort of, quick 3-minute video of, a great communicator, Manisha Verma is your person. She visited Karigar. In the way, in 3 minutes, she was able to give a bite for us about, Karigar. I don't think, professional actress or a professional, trained person would have done that job. So, very thankful to her. Madhvi Sardeshmukh, Madam as well, who is the director of DVT now, and Yogesh Patil, who is the director for Maharashtra State Board as well, and Dr. Anil Jadhav. So I think at national level, now of course this was a Maharashtra, and after Maharashtra, as we were looking to expand our wings outside of Maharashtra, we were blessed to have Shri Anil Swarup, and many of you might have known about him. He is the reason why we are Pan-India, today, because during his tenure at the Ministry of Education, we expanded our work to 20+ schools, and the current Secretary of Education, Mr. Sanjay Kumar. I keep telling Sunanda, I just telling her yesterday that all these senior people, whenever we send him a message, on WhatsApp or anything, they are able to reply instantly back, and as if. And I said, I can't, even though manage such a small NGO and can't able to manage to reply to people even after 2 days, 3 days. I really want to know how do they manage their time to get back to, us. So very blessed to have such bureaucrats in our journey here. And of course, sort of, many more. Today we are focusing on the government of Maharashtra bureaucrat because we are doing this, celebration in Mumbai today. Other milestones, Saksham TOT model, training of trainers is going to be such a huge part of our work going forward now. So that is what we'll be scaling up, as well. We'll be internship for high school students. You saw our brilliant interns, speaking to you about what it has been going on. Skills on Wheels, I hope you got to visit the Skills on Wheels outside. If you didn't, please, have a visit as well. Scholarship for higher education student. I must mention Nimesh Bhai here. Many of you must be knowing Caring Friends. Nimesh Bhai, is part of the Caring Friend, Ramesh Bhai as well. And he's the one who funded 5 lakhs rupees back in 2013 or 14, I think, with which we started our scholarship for high school students. And today, we have a portfolio of almost 1 crore, which we are giving on the scholarship side. So very, very thankful to Nimesh Bhai here. Lighthouse, it has become, Lighthouse is the online MIS tracking, which we do for the state level monitoring and tracking of the vocational education in the state. It has been now adopted by 8 states across India to be the official record of the vocational education happening in the states around. Going global, we spoke about Nigeria here.
transforming ATL schools, Atal Tinkering Labs. As you know, it has been a Niti Aayog's initiative and is going to scale up to 50,000 schools now. And we've been working with, across India. I think we have Arundhati here. Is Arundhati around? No? Arundhati, you want to say a few quick words? Thank you so much, sir. So actually अटल टिंकरिंग लैब अटल टिंकरिंग लैब को ऑपरेशनल सर ने जैसे बोला कि लाही इज़ अ रिसोर्स फॉर ऑल द स्कूल्स एंड द पार्टनर्स सो एग्जैक्टली अटल टिंकरिंग लैब में भी वही हुआ है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको हमने ट्रेन किया है एक मेंटोरशिप के लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने उसमें कनेक्ट किया है और एट द एंड एज अ सेलिब्रेशन हम एग्जीबिशंस भी प्लान करते हैं एंड एज अ प्रोडक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेटेंट दे आर एक्चुअली processing for the patent. The second thing is few students actually invited for the attend the Delhi parade. So many opportunities are coming for the students because of this initiative. And currently we are working with the 1,000 ATL labs across Maharashtra. So which was a one district level model. And currently we scale up this model for 1,000 schools across Maharashtra. Thank you, Arundhati. So we had, G20 Karigar official visits. We had Manjul Bhargava also visiting. He has been a great supporter now, for us. And NCRT is now, Lend Hand India also is a member of textbook development for grade 6 to grade 10 for the vocational education as well. So very fortunate to be, contributing to this as well. We got recognized by the 23-24 Economic Survey of India. It was such a huge surprise for us. Somebody, called us, do you guys know that you have been featured in Economic Survey of India? There was such a, that as a model by which the civil society can work with the government. Our monitoring and, MEL system got recognized by Co-Impact in this case studies as well. So quite happy about that as well. And I would say that, we have few alumni today here of Lend Hand India. Mayur, Khaire, Sagar Gund, Madhura, Kanhe, then another Sagar, Sagar 2 are also here. Do you guys want to say a few words? How much you are missing Lend Hand India now? No? Yeah, since you said only good things, I'll Yes. start and say good things. Lend a Hand India feels like a family. And there is a lot that I've learned from Lend a Hand India. Especially, we know that intelligence nowadays is not static, it grows. You develop new neural pathways and you develop, bigger intelligence. So like that, Lend a Hand India has acquired a trick of developing pathways into government system, which is not an easy thing, which takes a lot of tenacity, which, when you work with the government, you unfortunately, go through a lot of frustration. And Lend a Hand India stood there when many could not. That is not easy job that, getting recognized in economic survey, and all credit goes to both of them. And you know how fantastic storyteller Raj is. Today he told us we have so many funders, we have so many, bureaucrats not showing single text on the screen. And that is his talent that I really want to learn from him. And like I said, it is like a family to me. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you very much. Anyone else? Okay, cool. We'll move on. I'm getting signal in any case that we are running, pretty late now. So thank you, our alumni, for joining us, today, because once you are a Lend a Hand India family, always you are a Lend a Hand India family. So thank you. And I think I'm done here. Great. Thank you. I think, my team is relieved that the storytelling is over. Yeah. थैंक यू राज सर शेयरिंग दिस अमेजिंग मोमेंट्स विद अस. आपका ये इनिशिएटिव थॉट हम जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट के लाइफ का पार्ट बन चुका है. And yes, after watching this, I got to know that it's not just a hand. There are so many hands
जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी कहानी वीडियो में दिखाई दी थी और अपने दोस्तों से भी सुन ली। But do you all know we have something more special for all of you? A coffee table book that capture the iconic moments of Lahi's journey. Let's invite Anubhav sir, Senior Manager, Lend a Hand India, to facilitate the session. Thank you, Anita and Vishal. Hello, good evening, everyone. Thank you for joining us on this occasion today. This is a beautiful book that is commissioned by Manu Bhai and Rika Bain from the Sarv Mangal Trust, Family Trust that we just saw in the pictures and Raj was explaining that. And what can be a better occasion for us today to have the launch of the coffee table book for Lend a Hand India. And for this, may I request our dignitaries, Mr. Ashish Kumar Chauhan, Managing Director and CEO, National Stock Exchange, on the stage, please. Ms. Kalpana Morparia, former Chairperson, JP Morgan, and former Joint MD, ICICI Bank. And Mr. Ashok Vaswani, Managing Director and CEO, Kotak Mahindra Bank. Request the team to hand over the books to the dignitaries here. Raj and Sunanda, may I please request you to join us on the stage? May sir, please join us. And as we let this moment of joy, I request everyone on the stage to please hold the book, face the audience, and kindly untie the ribbon and unveil the book launch. Can you please open the book? Yeah. Okay, yeah. This picture would help. Yes. Thank you so much, everyone. And I think we all can purchase the book from the counters outside, and let's. Okay. All right. Thank you. So may I request Anita and Vishal to please take over the session from here. I think, thank you so much, Ashish, Kalpana, and Ashok for being here with us, today. Very quick casual conversation, with them. Maybe you can just share your first memory about, getting to know about Lend a Hand or Sunanda or Raj or whatever. What is yours? So clearly, like you said, first memory was my office in New York, and here was Raj, who was meant to be our finance head, looking after the finances of the largest strategic business unit of cards. And he comes into my office and all he talks about is his dream for Lend a Hand. I remember him talking about the marathon and how they planned it in Central Park. That's so clear in my mind. I was unlucky that I didn't meet Sunanda for a long time. It was much later. I think when I got back to Bombay, that I met her. But I'll tell you a funny story. I kept in touch with Raj, with all the things that he did and stuff. So every 9, 12, 18 months, hey Raj, what's happening? How are you doing?
And then Raj would say, lend a hand is doing this and it's doing that, and we're going from strength to strength, and this, that, and the other. And then he would say, how are you doing? And I used to feel so small. I used to say, Raj, I'm busy. I'll speak to you later. Go ahead. So that's the story of Raj and all the fantastic things they've done together. Thank you, Ashok. So my first introduction to Lend a Hand India was actually through Ravi. And Ravi talked a lot about what Raj was doing. And then, of course, this burst of energy came into the JP Morgan office and talked to us. What I really want to call out is how prescient they were 20 years ago. If you know the biggest talk today, including in the largest economy in the world, the USA, where people are saying we want to drop out of college because the way forward is vocational training and being micro-entrepreneurs. So they are actively encouraging people who are in college today is to say, don't you want to leave college because AI might, disintermediate all the white-collar jobs, people like us, bankers, all of us actually. But it's not going to interrupt anyway soon, at least not for the next 50 years, all of the carpentry, the gardening, everything. So how prescient you were 20 years ago. And the other thing I want to call out is, when this was unheard of, to go and work with state governments and change their mind to say not just an optional subject, but a scoring subject, which eventually led to the new education policy. I think both of you are phenomenal. I only knew Raj, and then one day I decided I actually want to go to Pune and spend a day with them. That's where I met you and realized that this was the real power behind what we saw Raj talking to us about. Thank you. Ashish. In some ways, I know Raj the longest, other than the family. He used to work for me around 95. He joined out of campus in Mumbai, and he will run away to Pune every weekend. And all of us are the same age, but I was a boss. And so all the young people used to hang out at my house, and I used to say, "ये किधर जाता है?" बोले उसकी girlfriend है. So that is how, because they studied in Pune together. Yes, yes. And so I said, "भाई शादी कर ले." And then one day he said, "Sir, मेरे को अमेरिका जाने का है." I think Texas, Austin, yes, right? Austin. So इन लोगों ने मेरे से वो लिखवाया एज अ बॉस. माने कोई मुझे फोटो दिखेगा तो आई वुडंट लुक लाइक अ बॉस, बट वो लोग ने रिकमेंडेशन लेटर लिखवाया, उसको एडमिशन मिल गया, चला. मतलब अभी तो बंदा वापस नहीं आएगा. देन ही शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क, एंड इन न्यूयॉर्क आई हैड लाइक लॉट ऑफ पीपल हु हैड वर्कड फॉर मी at NSC, and they used to get together when I would go to New York to my sister's house. So he started coming to my sister's house, and he started, they became much closer than I was. And then he wanted to, once I went, he called me out saying, "Boss, बात करनी है." बोला, "क्या बात करनी है?" बोला, "मुझे नौकरी छोड़नी है." And I have a great boss, which I didn't know Ashok was, who encouraged me, कि भाई कर ले. So even now, that's, I think, at Central Park or somewhere, you were telling me all this. And in between, Sunanda would come, stay in India, come to Mumbai, come and meet me. And I will listen to them कि कुछ तो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ाएंगे. And then he started training my sister, who had never run in life, to run marathon. And many other people, so that they would contribute to his marathon running in New York. And there were like many groups. He was the teacher. And someday he said, "Boss, अभी तो मैं इंडिया ही आ रहा हूँ." So I said, "देख, तू आएगा तो सही, लेकिन इंडिया बड़ा डिफिकल्ट काम है. तुम लोग सब अमेरिकन लोग हैं, पैसा चाहिए." तो पहले 2 साल का, and my wife had come into money at that point in time, so I had convinced her कि ये पागल है, लेकिन अच्छा पागल है, but at least कुछ तो अच्छा करेगा, तो उसको फंडिंग कर. So that's how I organized funding from my wife for him. And that's how, in some ways, it started. And of course, they've gone beyond what anyone would have imagined. This is when I was sitting there, I was also almost crying. ये बच्चों को देख के क्या confidence है, क्या माने ये लोगों ने create किया है. It is way beyond anyone
could have imagined and can imagine. Of course, my colleague, ex-colleague Amrish is sitting here. He also, all this wheels, skills on wheels and all those ideas came about. It is, the entire scale, scope, how it is helping India, it is unbelievable. And thanks to, and many times I used to think ये लोग को बच्चे नहीं है इसलिए इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि आगे वाली पीढ़ी एक सक्षम बने. तो thank you both for dedicating your lives to India. Very, very thankful, Ashish, here as well. What do you think about our next 20 years now? So for me, I don't think we should talk about the next 20 years. You have to talk about the next 200 years. Because you built an institution. Yes. And that institution can think in interim milestones of 20 years, but our vision has to be 200 years. Thank you. Ashok? Simple. The sky is the limit and records are only made to be broken. So keep going. Ashish? Keep on evolving. See, ये लोग जब ये चालू किया तो वो बोलते थे मुझे कि यार मैं वेल्डिंग सिखाऊंगा, मैं मोटर वाइंडिंग सिखाऊंगा. मैं बोला ठीक है, वो लोग तो सिखा, फिर उन लोग को जब खुद का बिजनेस चालू करना है उसको पैसा कौन देगा? Because I come always from that mind कि उसको बिजनेस कैसे चालू कराऊंगा. तुम सिखाओगे, but if it doesn't get used तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं. नई टेक्निक है तो कैसे उनको पैसे देंगे, फिर वो लोग वापस करना भी चाहिए. ऐसा नहीं कि पैसा लेके गायब. So for me, I need that methodology to sort of give that micro lend, then it comes back, then we give it to others and others. And for me, the entire India, that boy Jagtap, Jai Jagtap, right? Where is Jai? The boy who made that nursery. Yes, yes. I think must be outside. He has gone. Yeah. Yes. Achha, So, I think he said, na ki boss, I will give jobs, right? I want that India. Yeah. Every boy and girl have to learn something out of which they can make their life, right? Yes, yes. So that is what 20, 200, whatever years, we need to do that. Thank you. I think with support from all of you and Ashish, Kalpana and Ashok here today, we will make it to next 20, next 200, next even 2000. Thank you. Thank you all of you. Thank you so much, everyone. वेळ होत आली आहे. नॉस्टॅल्जिया, इमोशन्स, इन्स्पिरेशन सगळं मिळून 20 वर्षांची एक सुंदर जर्नी. नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो हो गए पिछले 20 सालों की बात. अब डू यू थिंक कि अगले आने वाले 20 सालों में लाही कहाँ पे होगा? हाँ विशाल, ये तो सोचने वाली बात है. मुझे लगता है कि इन 20 सालों में लेकर आने इंडिया में जितना ग्रोथ किया है ना, अगले 20 सालों में लाही बस इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी बहुत मशहूर होगा. और वहाँ के भी सारे बच्चों को ये पता होगा कि लाही क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है एंड उसकी कितनी जरूरत है. बिल्कुल. हम अपने इमेजिनेशन को थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और लेट्स इनवाइट आदित्य चोपड़ा एंड मालती मैम ऑन स्टेज. आदित्य चोपड़ा, वो तो बॉलीवुड के मूवी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, उनका दिल तो पागल है, इसलिए वो मूवी छोड़ के लैंड हैंड इंडिया आ गए. लेट्स गिव हिम ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप, मालती मैम एंड आदित्य सर. हेलो. अभी तक हमने देखा कि पिछले 20 साल में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किन के साथ हुआ है. आइए अब देखते हैं अगले 20 साल में हम क्या करना चाहते हैं. सॉरी, क्लिकर राज ले गए हैं. So we'll wait for Raj for the clicker, but you can change. Before we get to what we want to do in the next 20 years, I just want to reiterate what our mission is, because this is what we are sticking with, right? We want to equip school students to maximize their potential through skill education. That is our mission, and this will remain our mission for the years to come. As we think about what we want to do,
we have thought about 4 goals, right? And these 4 goals are what we'll talk about in the next 5 minutes. The first goal is to equip 1 million schools across India. अभी हम कितने स्कूल करते हैं मालती? हम करीब 15,000 schools. 15,000 schools तक हम पहुँचे हैं in 20 years, और टारगेट है कि हम 10 लाख स्कूल तक पहुँचे. इसका मतलब ये है कि अभी हम कुछ 20 लाख बच्चों तक पहुँचते हैं, 2 मिलियन, एंड टारगेट है कि हम 100 मिलियन बच्चों तक पहुँचे. राइट, इट्स अ मैसिव रोड अहेड फॉर व्हाट वी वांट टू अचीव. तो सबसे पहली बात जानने की यही है कि जो हम कर रहे थे मोटा मोटा हम वही करेंगे. वी आर नॉट स्ट्रेइंग फ्रॉम आवर गोल. कैसे करेंगे? वी हैव टू थिंक अबाउट मल्टी सेक्टोरल स्किलिंग, national education to drive this agenda and to achieve our goals. So I will invite our circle of stewardship. You're saying all the best for this journey ahead. Senior leadership team, round of applause once again. All the very best. This is for the next 20 years. श्री कोलेश्वर विद्यालय, तांदुळवाडी, सातारा. सत्यवान शिर्के प्रिन्सिपल सर, अनिरुद्ध नाईक टीचर, सारिका गोरफडे ट्रेनर, तो मैं अपने लेंडा हैंड इंडिया के फाउंडर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आइए और इस पल को यादगार बनाइए. एक फोटोग्राफ हो जाए. थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं राज सर, सुनंदा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर रुक जाए. अगला स्कूल है कोल्हापुर से, प्राइवेट स्कूल, जहाँ शिक्षक सोच देते हैं वही विद्यार्थी इतिहास रचते हैं. इस स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो पेटेंट किया है. तो मैं बुलाना चाहूँगी चैत्राली पुरेकर गाइड, अंजनी, संदीप सर, मयूरेश and Arush Anvenkar. मैं मयूरेश से रिक्वेस्ट करती हूँ अंजनी से कि वो जस्ट अपने इनोवेशन के बारे में शॉर्ट में बताइए. यस, थैंक यू. नमस्कार. आम्ही प्रायव्हेट हायस्कूल कोल्हापूरवरून आलेलो आहे. अटल इनोव्हेशन मिशनचाच उद्देशच हा होता की विद्यार्थ्यांमध्ये इनोव्हेशन विकसित झालं पाहिजे. शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढला पाहिजे. त्याचबरोबर 3D डिझायनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल हे जे विषय आहेत हे शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना अवगत झाले पाहिजेत. हा जो उद्देश आहे नीती आयोग, अटल इनोव्हेशन मिशनचा, हाच बहुतेक या दोघांना गवसलेला आहे. आणि यांनी शाळांमध्ये हा अटल टिंकरिंग लॅबचे जे शिक्षक आहेत यांना सुरुवातीला त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर टाकलेली आहे. कारण आमचं जे शिक्षण आहे हे वेगळं आहे आणि तुमचं इंजिनिअरिंग लेवलचं हे वेगळं आहे. पण आम्हाला सुद्धा त्या विषयांमध्ये गोडी लावली. याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा खारीचा वाटा आहे तो लेंड हँड इंडियाचा आहे. यांच्या आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग यांच्या अंतर्गत आम्हाला जे ट्रेनिंग दिलं गेलं
त्याचा खरोखरच विद्यार्थ्यांना खूप सारा फायदा झालेला आहे. आणि हे जे विद्यार्थी इथं उभारलेले आहेत हे स्कूल लेवलचे विद्यार्थी आहेत. 8वीमध्येच हे काम आम्ही सुरू केलेलं होतं. आत्ता ते विद्यार्थी 9वी आणि 10वीमध्ये आहेत. आणि याला चांगला सपोर्ट आम्हाला लाहीचा मिळालेला आहे, डसॉल सिस्टीमचा मिळालेला आहे. आणि त्याचबरोबर खरे आभार मला मानायचे आहेत ते मध्ये अरुंधती जाधव मॅडमचे. यांचा सपोर्ट आम्हाला खूप अतिशय महत्त्वाचा इथपर्यंत येण्यासाठी झालेला आहे. आणि आम्ही या प्रॉडक्टचं पेटंट देखील घेतलेलं आहे. याचा आम्हाला अभिमान आहे. थँक्यू लाही. अगला स्कूल है घाटले म्यूनिसिपल स्कूल सेकेंडरी स्कूल चेंबूर मुंबई. स्वाति चौधरी मैम, दीक्षा कदम, प्रीति सकपाल, मनवाइल फर्नांडिस, दीक्षा सागरे, सोनाली दुबे. मैं स्वाति मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. गुड इवनिंग एवरीवन. जब एक टीचर को माइक दिया जाता है और बोलते हैं 1 मिनट बोलना है तो बहुत मुश्किल होता है. 35 मिनट तो मिनिमम चाहिए टीचर के लिए. तो मैं जो हूँ, आप सबने जब एंट्री की थी तो आपके सामने एक स्किल वैन थी और स्किल वैन के यहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी थी, एक कारपेंट्री और एक इलेक्ट्रिक कवर. और उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके मम्मी पापा क्या करते. तो लड़की ने जवाब दिया मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा नहीं है. और उसके बाद उसने जो कहा कि मैं अपने पापा की जगह लेनी चाहती हूँ. ऐसे होशियार बच्चों की मैं प्रिंसिपल हूँ. आई एम द प्रिंसिपल ऑफ घाटला BMC स्कूल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि ये ऐसे मुझे स्टूडेंट्स हैं. और इनके लिए स्किल प्रोग्राम मेरे स्कूल में गए 11 साल से स्टार्ट किया है. आणि मराठी शाळेची मी प्रिन्सिपल आहे आणि मराठी शाळेचा गुणवत्ता आणि दर्जा वाढवण्यासाठी हा जो स्किल प्रोग्राम आहे हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. कारण 11 वर्षापूर्वी जेव्हा मी माझ्या शाळेमध्ये स्किल प्रोग्राम वोकेशनल सब्जेक्ट आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खूप विरोध झाला. बऱ्याच डिपार्टमेंटकडनं शाळेकडनं रूम 3 मिळण्यासाठी सुद्धा खूप विरोध झाला. कुठलीही नवीन गोष्ट सुरू करण्यासाठी खूप विरोध सहन करावा लागतो. पण मला वाटत होतं की BMCच्या मुलांसाठी जर आपण हा विषय आणला आणि लँग्वेज ऐवजी हा जर विषय शाळेमध्ये आला तर याचा खूप मोठा फायदा हे मुलांना. जसं सांगितलं की बिझनेस व्यवसाय हा फक्त श्रीमंतांच्या मुलांनी नाही करता हे गरिबाच्या मुलांनी सुद्धा व्यवसायामध्ये उतरलं पाहिजे आणि व्यवसाय स्वतःचा सुरू केला पाहिजे आणि यांच्या हाताखाली लोकांनी काम केलं पाहिजे. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही स्किलचा प्रोग्राम हा पायलट बेसिसवर आमच्या शाळेमध्ये चालू करण्यात आला. नाव 11 इयर्स कंप्लीट झालेले आहे आणि 40 विद्यार्थी फक्त परमिशन आणलेली आज आमची शाळा. आज 100% मुलांना आम्ही स्किल लर्निंगचं प्रोग्रामचं देतो आहेत. त्याच्यामध्ये रिटेल मल्टी स्किल यासारखे विषय शिकवले जातात आणि नवीन आता NEPनुसार नवीन विषयसुद्धा शाळेमध्ये इंट्रोड्यूस केलेले आहे. आणि मला आशा आहे की जी टीम ॲक्च्युली खूप छोटी टीम आम्ही बघत होतो, 3 जण येत होते आणि त्यांचे सुपरवायझर आमच्या शाळेवर येत होते आणि मध्ये मध्ये काही प्रोग्राम स्वाधीन यात्रा आमच्याकडे बरेच ट्रेनिंगचे प्रोग्राम आमच्याकडे राबवले जात होते आणि आज खूप मोठी टीम मला बघायला मिळाली आणि मी याचा पार्ट आहे. त्याच्यासाठी मी खूप थँकफुल आहे. तुमच्या सगळ्यांचे खूप थँकफुल आहे. आणि 20 इयर्स नाही मोर इयर्स इथे हे होत राहो आणि मला तुम्ही पुन्हा 40 वर्षांनी बोलवा. आणि माझी अशी इच्छा आहे की मी जरी रिटायर झाले तरी याच्यामध्येच काम करेल. धन्यवाद. थैंक यू सो मच एवरीवन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को लगता है कि सर और मैम के साथ फोटो होना चाहिए. तो अपने MCs और पैनल डिस्कशन वाले पार्टिसिपेंट प्लीज स्टेज पे आइए.
थैंक यू सो मच. 20 साल यादें भी हमारी, भविष्य भी हमारा. थैंक यू सो मच. मुझे पता है सबको बहुत भूख लग गया, but we just need few more minutes. So with this commitment to give the formal vote of thanks, I would like to invite Nilesh sir on the stage. We dearly call him Bhishma Pitamaha of Lahi because he is one of the key founding members of Project Catalyst government partnership which started here in Maharashtra and then reached all across India. So please do not leave your seats. After vote of thanks, we have something special for all of you. Oh, thank you. And good evening, everyone. I'm here to, it's my pleasure to deliver vote of thanks on behalf of the entire Lend a Hand India family over here. On this occasion, I would like to express my deepest gratitude to our special guest, Ashish Kumar Chauhan ji, Kalpana Murparia ji, and Ashok Vaswani ji. They have not even graced our occasion. They have also participated and shared their thoughts during our panel discussions. I also like to thank all of you who have been here in this evening to be with us and share our 20-year journey with us on this year, along with us on this time. I also like to thank the entire team of Lend a Hand India who has worked tirelessly for a few weeks to make this event happen and to make these arrangements over here. Teams from Mumbai, Pune, and Delhi, all over the places came here for this event. And I would also like to tell everyone who is here that your presence at this moment is actually our encouragement to go ahead in our next journey over here. One more reminder, we saw that the exhibition or the experience centers were crowded when you must have come. Right now you can visit the same centers peacefully, have experience over there. Don't miss the dinner right now over here. Again, I would like to thank you everyone over here. Have a wonderful dinner, have a wonderful evening all together, and thanks being here. Thank you very much. And the last announcement, before we leave the stage, two quick reminders. Well, you are having a dinner. Please visit our stall to get to know more details. और हाँ, हमने एक स्वीट सा जेस्चर आप सबके लिए रखा है. The personalized photo frames are specially handcrafted by our very own AI. Actually, the frames are made by our dearest students of Karigar School of Applied Learning. So please do not forget to take one. On a closing, we invite you sit back for a few more minutes to travel across India with us. This video brings entire Lend a Hand India together in one sur. और जाते जाते इतना ही कहेंगे, भूल चूक माफ करना, खाना अच्छे से खाना और कभी अलविदा न कहना. तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. धन्यवाद. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के. Mjög तरज थई mjög तरज इकवट बनिए सान तरज. तेरा सुर मिले मेरे सुर को नाल मिलके बने एक नवा सुरताल. मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं. सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले. வீசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை
நம்பிசை ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯ सृष्टि करी चालू चतनु सूर जो तारो मारो बने आपणो सूर निराळो माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ
पेश कर रहा हूँ और उसके बाद
Thank you.